वेलकम टू लर्निंग अड्डा। आज के इंग्लिश लैंग्वेज मॉक में हम ग्रामर, वोकैब्युलरी, पारा लॉजिक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 30 केयरफुली डिजाइन क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हर सेक्शन में एक्यूरेसी के साथ कंटेक्स्ट और सटल क्लूज पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हाइलाइटेड पार्ट को ग्रामर, इडियम और कंटेक्स्ट के बेसिस पर इवैल्यूएट कीजिए। अगर सेंटेंस पहले से करेक्ट हो तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड चूज कीजिए। Question 1. Sentence improvement. The committee's recommendation is that every disputed transaction is reviewed by an officer unconnected with the original decision. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. Recommendation के बाद that clause में mandative subjunctive use होता है, इसलिए इस reviewed की जगह base form भी reviewed आएगा। Question 2. Sentence improvement. Not until the reconciliation was complete the auditors realized how extensively the liabilities had been understated. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. सेंटेंस के बिगिनिंग में नॉट until आने पर मेन क्लॉज में इन्वर्शन रिक्वायर्ड है, इसलिए डिड द ऑडिटर्स रियलाइज करेक्ट फॉर्म है और अंडरस्टेटेड को मॉडिफाई करने के लिए एक्सटेंसिवली हाई रहेगा। Question 3. Sentence improvement. The lender would rather the guarantor disclose the encumbrance before the agreement is executed. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option E. Would rather के बाद जब सब्जेक्ट चेंज होता है, प्रेफर्ड प्रेजेंट या फ्यूचर एक्शन के लिए सिंपल पास्ट यूज होता है। The guarantor disclosed यहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसलिए रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। Question 4. Sentence improvement. The revised disclosure norms are intended to prevent borrowers to conceal obligations held through related entities. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option A. Prevent का correct pattern है prevent someone from doing something. इसलिए to conceal को from concealing से replace करना होगा। Question 5. Sentence improvement. Such was the opacity of the revised formula as even seasoned analysts could scarcely distinguish its assumptions from its conclusions. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. यहाँ रिजल्ट दिखाने के लिए फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन सच वॉज अ नाउन दैट यूज होता है, इसलिए एज को दैट से रिप्लेस करना करेक्ट है। एरर डिटेक्शन में सेंटेंस 4 लेबल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ग्रामर, कंस्ट्रक्शन और कंटेक्स्ट चेक करके एरर वाला सेगमेंट आइडेंटिफाई कीजिए। अगर पूरा सेंटेंस करेक्ट हो तो नो एरर चूज कीजिए। Question 6. Error detection. Please listen to the complete sentence. What the investigators found most disconcerting were not an isolated lapse but a pattern of deliberately incomplete disclosures. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. What से शुरू होने वाला पूरा नॉमिनल क्लॉज सब्जेक्ट है और सिंगुलर यूनिट की तरह फंक्शन करता है, इसलिए वन नॉट की जगह वॉज नॉट होगा। एरर सेगमेंट बी में है। Question 7. Error detection. Please listen to the complete sentence. No sooner had the moratorium been withdrawn when several firms sought emergency refinancing from their principal lenders. Please check the options on the screen and determine the correct answer.
अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. No sooner का फिक्स्ड पार्टनर than है, when नहीं। इसलिए सेगमेंट सी में when को than से रिप्लेस करना होगा। Question 8. Error detection. Please listen to the complete sentence. Neither the unexpectedly sharp decline in deposits nor the assurances offered by management appear to have altered the agency's assessment. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option E. Neither nor construction में verb nearest subject से agree करता है। Nearest subject assurances plural है, इसलिए appear correct है। बाकी sentence भी grammatical है, so no error. Question 9. Error detection. Please listen to the complete sentence. More than one external reviewer have questioned whether the valuation method captures risks that emerge only under severe stress. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. More than one के बाद singular noun और singular verb use होता है। इसलिए reviewer have questioned incorrect है, reviewer has questioned correct होगा। Error segment B में है। Question 10. Error detection. Please listen to the complete sentence. Having been denied access to the annexures, the conclusions of the audit seemed unpersuasive to the independent reviewers. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option A. Opening modifier a subject को describe करता है, जो तुरंत बाद आता है। यहाँ conclusions को access deny हुआ ऐसा illogical meaning बन रहा है। Access reviewers को deny हुआ था, इसलिए dangling modifier segment A में है। डबल फिलर्स में दोनों ब्लैंक्स के लिए ऐसा वर्ड पेयर चूज कीजिए जो ग्रामर के साथ सेंटेंस का एग्जैक्ट लॉजिक भी प्रिजर्व करे। कॉन्ट्रास्ट और कॉज इफेक्ट क्लूज पर ध्यान दीजिए। Question 11. Double fillers. The Ghana's statement was blank enough to steady the markets, yet sufficiently blank to preserve room for a policy reversal. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option A. Statement ने markets को steady किया, so first blank reassuring होगा। साथ ही पॉलिसी रिवर्सल की फ्लेक्सिबिलिटी बची, इसलिए स्टेटमेंट क्वालिफाइड यानी रिजर्वेशंस के साथ था। करेक्ट पेयर रियश्योरिंग एंड क्वालिफाइड है। Question 12. Double fillers. What initially appeared to be a blank discrepancy proved, after the ledgers were reconciled, to be blank of systematic revenue inflation. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. Initially discrepancy minor लगा, लेकिन reconciliation के बाद उसने deeper systematic problem indicate की। इसलिए negligible and symptomatic correct pair है। Question 13. Double fillers. The circular's blank wording did little to blank depositors' apprehensions about the proposed restrictions. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option C. Equivocal wording ambiguous होती है, इसलिए वो डिपॉजिटर्स की कंसर्न कम नहीं कर सकी। एप्रीहेंशंस को रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड कॉलोकेशन एले एप्रीहेंशंस है। Question 14. Double fillers. Although the evidence was blank, the inference drawn from it was surprisingly blank,
leaving little scope for a competing explanation. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option B. Although unexpected contrast show करता है. Evidence incomplete, यानी fragmentary थी, फिर भी inference इतना strong था कि alternate explanation की little scope बची. इसलिए compelling second blank में fit होता है. Question 15. Double fillers. By blank a temporary liquidity shock with structural insolvency, the commentary blank rather than clarified the institution's predicament. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option B. Temporary liquidity shock और structural insolvency को incorrectly same treat करना conflating है. इस confusion ने situation clarify नहीं की, बल्कि obscure कर दी. इसलिए conflating and obscured correct pair है. Word usage में focus word के meaning, grammar और collocation को हर statement में separately check कीजिए. फिर सिर्फ correct usages वाला combination choose कीजिए. Question 16. Word usage. The focus word is qualify. Statement 1. Only firms meeting the revised capital threshold qualify for the facility. Statement 2. The economist qualified her optimistic forecast by noting to substantial downside risks. Statement 3. A procedural irregularity does not automatically qualify as evidence of fraud. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option E. Statement 1 में qualify for का meaning eligibility need करना है. Statement 2 में qualify a claim का meaning उसको limit करना है. Statement 3 में qualify as का meaning required status meet करना है. तीनों usages correct है. Question 17. Word usage. The focus word is intimate. Statement 1. The memoir reveals intimate details of the negotiations without naming the officials involved. Statement 2. The chairperson intimated that further concessions would depend on verifiable compliance. Statement 3. The new analyst intimated with the regulations before reviewing the filing. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option C. Statement 1 में intimate का meaning private details है. Statement 2 में intimated verb है, meaning indirectly indicated. Statement 3 में intimated with का construction incorrect है, became familiar with use होना चाहिए. सिर्फ 1 and 2 correct है. Question 18. Word usage. The focus word is exact. Statement 1. The filing does not disclose the exact date on which the guarantee became enforceable. Statement 2. Prolonged uncertainty can exact a heavy price from otherwise solvent firms. Statement 3. The statistician exacted the estimate to the newly released data. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option C. Statement 1 में exact adjective है, meaning precise. Statement 2 में exact verb है, meaning impose or demand a price. Statement 3 का construction idiomatic नहीं है, estimate को adjust या align किया जाता है. सिर्फ 1 and 2 correct है. Question 19. Word usage. The focus word is sanction. Statement 1. The subsidiary cannot sell the pledged asset without the regulator's sanction. Statement 2. The authority sanctioned the intermediary for repeatedly concealing client complaints. Statement 3.
The spokesperson sanctioned the rumor as false before the market opened. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option C. Statement 1 में sanction official approval है. Statement 2 में sanction का meaning penalty impose करना है. Statement 3 में rumor को false identify या dismiss किया जा सकता है, sanction नहीं. सिर्फ 1 and 2 correct है. Question 20. Word usage. The focus word is bear. Statement 1. Shareholders, rather than depositors, should bear the cost of managerial failure. Statement 2. The witness's earlier employment may bear on the credibility of her testimony. Statement 3. Subsequent cash flow data did not bear out the company's optimistic projections. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option E. Statement 1 में bear the cost का meaning cost carry करना है. Statement 2 में bear on means relevant होना. Statement 3 में bear out means evidence से confirm करना. तीनों usages correct है. Sentence rearrangement में opening sentence, pronoun references, logical transitions और conclusion को trace करके coherent order identify कीजिए. Question 21. Sentence rearrangement. Arrange these sentences. P. That veneer of precision can obscure the judgments embedded in the selection and weighting of variables. Q. Algorithmic credit models translate a borrower's history into a seemingly objective numerical score. R. If those judgments reproduce past patterns of exclusion, the model may perpetuate them while appearing neutral. S. Hence, meaningful validation must examine not only predictive accuracy but also how the model distributes errors. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option B. Q algorithmic scores introduce करता है. P में that veneer on scores की seeming objectivity को refer करता है. R hidden choices का consequence बताता है और S hence के through conclusion देता है. Correct order QPRS है. Question 22. Sentence rearrangement. Arrange these sentences. P. This omission matters because digital channels allow unease to become a deposit run within hours rather than weeks. Q. Traditional stress tests concentrated on credit losses while treating the deposit base as comparatively stable. R. Recent episodes have confirmed that even solvent institutions can face acute pressure when confidence evaporates abruptly. S. As a result, supervisors are beginning to model the speed of withdrawals alongside the eventual volume. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option A. Q old stress test assumption बताता है. P का this omission rapid deposit withdrawal को ignore करने से linked है. R recent evidence देता है और S as a result से policy change conclude करता है. Correct order QPRS है. Question 23. Sentence rearrangement. Arrange these sentences. P. Suppliers may then withdraw marginal products whose costs can no longer be recovered. Q. Such interventions can therefore improve affordability only if their effects on supply are anticipated. R. A price cap may make an essential service immediately cheaper for existing consumers. S. The resulting shortage can exclude precisely those new consumers whom the cap was meant to help. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option B.
A प्राइस कैप और इंटेंडेड बेनिफिट इंट्रोड्यूस करता है। P सप्लायर्स का रिस्पॉन्स बताता है। एसआस रिस्पॉन्स से शॉर्टेज का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है। Q सच इंटरवेंशन से पूरे एग्जाम्पल को जनरल कंक्लूजन में कन्वर्ट करता है। ऑर्डर RPSQ है। क्वेश्चन 24। सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अरेंज these sentences. P. Nevertheless, public debate often treats the first estimate as a settled fact merely because it is expressed to a decimal point. Q. Early estimates of national output are routinely revised as more complete information becomes available. R. Policymakers should therefore respond to the range of plausible outcomes, not to the spurious certainty of a single preliminary figure. S. These revisions reflect the unavoidable delay with which thousands of firms report their activity. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option B. Q revised estimates introduce करता है। S revisions का source और significance explain करता है। P nevertheless से initial precise number और actual uncertainty contrast करता है। R policy conclusion देता है। Correct order QSPR है। Question 25. Sentence rearrangement. Arrange these sentences. P. When crucial qualifications are buried among hundreds of immaterial details, technically complete disclosure can still leave readers poorly informed. Q. Thus, transparency depends as much on the hierarchy and clarity of information as on its mere availability. R. Yet disclosure can fail without any fact being formally withheld. S. Requiring institutions to publish more information is commonly assumed to strengthen accountability. Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है। The correct answer is option D. S. Disclosure और expected accountability introduce करता है। I yet के through expectation को challenge करता है। P. Information overload का mechanism explain करता है और Q thus से conclusion देता है। Correct order SRPQ है। Reading comprehension में passage का thesis, examples, implications और tone identify कीजिए। Answer सिर्फ stated या clearly implied information पर base होना चाहिए। अब passage सुनिए। Institutions often measure what they can observe rather than what they ultimately care about. A lender cannot directly observe a small firm's resilience, so it uses repayment history, cash balances and sector averages as proxies. A hospital cannot place quality of care in a spreadsheet, so it records waiting times, readmission rates and patient surveys. Such measures are indispensable. Without them, comparison becomes impressionistic and accountability elusive. Yet a proxy does not merely describe an organization once rewards or penalties are tied to it. It begins to reorganize the activity being measured. Managers learn which actions improve the recorded figure, sometimes without improving the underlying outcome. A hospital can reduce reported waiting times by changing when the clock starts. A lender can lower measured default risk by excluding applicants whose circumstances make them difficult to classify, even when some would repay reliably. The difficulty is not simply that people cheat. More often, they adapt rationally to a rule that compresses a complex objective into a tractable number. Nor does adding more indicators necessarily solve the problem. A crowded dashboard may conceal conflicts among measures and make accountability harder by allowing every result to be defended with a favorable statistic. Better measurement therefore begins with modesty about what a metric represents. It combines quantitative indicators with periodic qualitative review, examines who disappears from the dataset and revises incentives when the proxy starts displacing the purpose it was meant to serve. Precision is valuable, but precision about the wrong object can make an institution confidently mistaken. Question 26. Reading comprehension. Which statement best captures the central argument of the passage?
Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option C. पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट है कि मैट्रिक सिर्फ रियलिटी रिकॉर्ड नहीं करता, टारगेट बनने पर बिहेवियर को चेंज भी करता है. इसलिए अपेरेंट प्रिसिजन के बियॉन्ड उसके पर्पस और इफेक्ट्स को टेस्ट करना चाहिए. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है. क्वेश्चन 27. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Why does the author say the problem is not simply that people cheat? Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option B. Author cheating और incentive driven adaptation में distinction करता है. मैनेजर्स फॉर्मल रूल फॉलो करते हुए भी ऐसा बिहेवियर चूज कर सकते हैं जो मेट्रिक इंप्रूव करे बट रियल ऑब्जेक्टिव को अंडरमाइन करे. इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन 28. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इन द पैसेज, व्हाट डज द फ्रेज हु डिसअपियर्स फ्रॉम द डेटा सेट मोस्ट नियरली रेफर टू? प्लीज चेक द ऑप्शंस ऑन द स्क्रीन एंड डिटरमाइन द करेक्ट आंसर. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option C. Phrase literal deletion की बात नहीं कर रहा. Lender example में difficult to classify applicants को exclude करने से उनका experience data में visible नहीं रहता. इसलिए option C correct interpretation है. Question 29. Reading comprehension. Which of the following would the author most likely endorse? Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option D. Author measurement को रिजेक्ट नहीं करता. वो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस के साथ क्वालिटेटिव रिव्यू और इंसेंटिव ड्रिवन बिहेवियर एग्जामिन करने को कहता है. ऑप्शन डी एग्जैक्टली इसी बैलेंस्ड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है. क्वेश्चन 30. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Which description best characterizes the author's tone? Please check the options on the screen and determine the correct answer. अब टाइमर शुरू होता है. The correct answer is option B. Author metrics को indispensable मानता है, लेकिन उनकी लिमिट्स और बिहेवियरल इफेक्ट्स को केयरफुली एनालाइज भी करता है. टोन बैलेंस्ड, कॉशियस एंड एनालिटिकल है. इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है. डेली लर्निंग कैप्सूल को देखने के लिए धन्यवाद. ऐसे हाई ओरिजिनल बैंक एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.